supposed to be as per new educational policy, current Indian teaching. As per UGC said that this is how you must teach, online, offline, blended mode. ट्रेडिशनल चौक टॉक भी रहेगा. ओके, एकदम फर्स्ट लाइन में जाओ जहां पे मेरा नाम है. ठीक है. Okay, so this is about one more very important thing which you people should understand before you go to study anything. That is plasmids. That is the perhaps right now the DNA which actually caused several breakthroughs in molecular biology. That is study of plasmids. So plasmids, first thing you can define it as an extra chromosomal circular DNA. So it is not a part of the chromosome or bacterial chromosome, whatever you call it, and it's just a circular DNA. Double-stranded, it can be single-stranded, but it's a circular DNA. And it is not essentially does not have any of the main genes of the organism. Supplemental genes are present. For example, a bacteria is not supposed to be resistant to any antibiotic normally, but it can gain these plasmids which have got these antibiotic resistance, and therefore they are resistance to antibiotic. Normally, antibiotics are not there in the media. It is not there. But when it is in the media, they die. Normally, in a normal media, they don't need that plasmid to survive. But you put that plasmid inside them, and so they have got a resistance. So they are using that DNA is using the host mechanism, host machinery, and making lots and lots and lots of its own product. That is the gene, the protein which is responsible to confer resistance to antibiotic. Ampicillin में beta lactamase होता है. It's an enzyme which makes a protein which makes the bacteria resistance to antibiotic. So now I just draw, you can see नीचे next वाले में जाओ. बाइजू से मैं इसको लिया था. बाइजू का जो होता है ना ऑनलाइन वेबसाइट, वहां से I have taken this picture from Byju's, and because it's a very easy that you can get 100,000 pictures of PBR322, but in Byju I found out it's very simple and it has got everything over here, more or less. So they are small circular double-stranded DNA molecules. They exist independent of the bacterial chromosome. And उसका कोई link नहीं है bacterial chromosome के साथ. They are present in bacteria, some yeast, and some fungi. They are capable of autonomous replication due to their own replication origin. This is very important. देखो origin of pink color या purple color जैसे दिख रहे हैं, origin of replication, ORI sequence है. This particular sequence, when it is present, it allows DNA polymerase to bind and replicate. If there is no ORI sequence, the plasmid will not be able to replicate. Okay. You have light green color ampicillin resistance gene. One is good enough, but this particular PBR322, it has got two. One is tetracycline resistance and another is ampicillin. So double antibiotic selection you can do. Or ampicillin selection in bacteria, tetracycline selection in another bacteria.
Okay. It is not essential for bacterial survival. Plasmids are not उसके बगैर भी वो लोग जी सकता है, but can provide selective advantage such as antibiotic resistance. So this was first ये जो इंसान को देख रहे हो, this person was Joshua Lederberg. He coined the term plasmid first time in 1952, and he basically Lederberg and Tatum, they had this experiment. They worked on fungus known as Neurospora crassa. So there they studied about genetic inheritance, how Neurospora spores are there, black spores, white spores. He did lots of experiment with Neurospora fungi, and he also worked with artificial intelligence and space exploration. He had the concept that if fungi can grow in space, so yeah, he wanted actually when man first went to the moon, Neil Armstrong's mission, Apollo 11, first went to the moon. He wanted to send fungus over there to see how they survived there. So he had lots of theories and also an artificial intelligence, robots and artificial intelligence. So he got the 1958, he got the Nobel Prize, and for his discovery that bacteria can mate and exchange genes. Conjugation in bacteria. Yay. He found out. So there are different types of plasmids. By function, you can classify them into fertility plasmid or F plasmid, resistance plasmid, call plasmid. You can make it degradative plasmids, virulence plasmid. Fertility plasmids, they carry a gene known as TRA gene. And because of this TRA gene, they can transfer genetic material from one bacteria to another bacteria through conjugation. You need this TRA gene, F plasmid present. You have R plasmids. ये PBR32, it's an R plasmid. You see antibiotic resistance. You have col plasmid. PBR322 is also a col plasmid. That it encodes bacteriocins, antibacterial proteins that kill other strains of bacteria. दूसरे को मार देता है. ठीक है? And then you have the degradative plasmids. They allow the host to digest unusual substances such as toluene or salicylic acid. हजम नहीं हो रहा है कुछ चीज, हजम करने का they don't have enzymes. तो ये plasmid घुसा दिया, it's able to degrade that material. They're making that thing. तुम उसमें से इंसुलिन ही प्रोड्यूस करवा दे रहे हो. What is the use of insulin for bacteria? कोई यूज नहीं है, लेकिन you are using that bacteria and making lots of insulin. Bacteria has got no function about that. What does insulin do? Insulin helps cells to absorb glucose, and that too through SGLT receptors. They don't have these receptors at all. So no insulin function, but they're making lots of insulin. And virulence plasmid. They carry genes that turn bacteria into pathogens that enable to produce toxins or other factors that enhance their ability to cause disease. Now, you can even classify plasmids on based on their transferability. You can have conjugative plasmids, non-conjugative plasmids, and mobilizable plasmids. So, conjugative plasmid means from donor cell that plasmid can be given to the receptor cell. Non-conjugative, they lack the genes required for transfer, but can be mobilized by conjugative plasmids. So that plasmid is there, दूसरा plasmid घुसा दिया, conjugative plasmid that can be transferred. And mobilizable plasmid carry only a subset of the genes required for transfer and rely on conjugative plasmids to complete the process. खुद ब खुद नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर conjugative plasmid है तो हो जाता है. Now a wonderful thing is about episome. So एक F plasmid, take an F plasmid in bacteria. It's sometimes released, these plasmids are released by virus also. This virus के अंदर ही naturally occurring resistance normally comes to virus.
और lateral gene transfer. Plasmid घुसा दिया, but this plasmid gets integrated into the host bacterial host chromosome, and it's working normally. So it's no longer a plasmid, extra circular और नहीं है, वो linear होके घुस गया है, but it's doing it. That is known as episome. And ये और भी stable होते हैं, much more stable. The reason being that it's part of the bacterial chromosome. Plasmid अगर say if you have a bacteria and you put an antibiotic resistance plasmid inside, PVR 322 दे दिया. This plasmid is an extra burden for the cell. So if there is no ampicillin, उसका कोई जरूरत नहीं है, वो छोड़ देता है, बाहर फेंक देता है. छोड़ देता है मतलब जब डिवाइड होता है, एक में प्लाज्मिड रहता है, एक में प्लाज्मिड नहीं रहता है. ओके, একদিকে রইলো, একদিকে থাকলো না. This is how it works. And so one has, one doesn't have. That one which doesn't have, antibiotic दोगे तो मर जाएगा. So but normally without antibiotic it doesn't need. There is no selection pressure for it to keep this plasmid. But if there is a selection pressure, then it stays. But when it becomes an episome, it's a part of the bacterial chromosome. It's much more stable. वो तो रहेगा, परमानेंट हो गया, एंटीबायोटिक रहे या ना रहे. ओके, राजा सर पहुंच गया है. So next slide में जाओ, basic structure of a plasmid. देखो, you have the promoter, which is supposed to, first thing which it has is the origin of replication, selectable marker, or which can be an antibiotic resistance gene or anything which you can select. Okay, for example, there are plasmids, for example, tryptophan. In yeast they use tryptophan. So what do these yeast plasmids have? Their selection is from tryptophan. So they grow them in a marker, they grow them in a media yeast which doesn't have yes, no, they grow them in a media which doesn't have tryptophan. So tryptophan, to make tryptophan, they need to have the genes which will synthesize tryptophan. So those cells which will grow in a media which doesn't have tryptophan, they are selected. Ulta selection. Then you have promoter sequence, inserted genes, restriction sites, जहाँ पे you have to clone. So you want to clone insulin inside, you have to have restriction sites. उसके ऊपर promoter रहना चाहिए. Promoter must be there. Otherwise, no promoter, no expression. Transcription होगा ही नहीं. Fine. So basically, three things required. First, origin of replication, multiple cloning sites, selectable markers. Best is something like 1 kb. Perfect best plasmid for cloning is 3 to 4 kb size. If it's too bigger, if it's very big, then the problem is very difficult to transform into the bacteria. टूट जाता है. If it is very small, the insert size must be smaller than the vector size. इंसुलिन का साइज से वेक्टर बड़ा होना चाहिए. ज्यादा छोटा होगा तो यू विल बी अनेबल टू क्लोन एंड लाइगेंड देम. यू कैन जोड़ नहीं पाओगे दोनों को. बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स. इट्स थियोरेटिकली जोड़ सकते हो, बट प्रैक्टिकली इट्स नॉट. मतलब बहुत मुश्किल, मतलब चांस बहुत कम हो जाता है प्रैक्टिकली. भेंगे जाए लागे ही ना, क्योंकि जोड़े ही ना. 3 to 4 kb size, perfect size to ज्यादा. So how do you transform them in bacteria? You make the bacterial cell wall much more permeable by giving calcium. Pores हो जाता है. And then you give the plasmid, plasmid घुसता है. लेकिन ज्यादा बड़ा होगा तो आधा घुस के बैठ जाएगा. You give a heat shock,
वो खुल जाता है, कैल्शियम करके अंदर जाता है, फिर देन यू गिव पुट देम ऑन आइस, कोल्ड शॉक दे देते हो, खोल के ही बंद कर देते हो। घुसेगा नहीं, आधा घुस के दरवाजा बंद हो गया, हाथ फंस गया बाहर में, तुम घुस नहीं पाए, यू विल नॉट बी एबल टू वर्क। So this is the reason why it should be something like, ये नहीं है कि I had also I tried to clone an 11 kb insert into a 7 kb vector, मैं किया था, successful, but where in a particular bacterial plate each colony is one particular transformed plasmid, you get countless number of 10 to the power 6 number of colonies, bacteria have been transformed, the colonies मिलेगा, where you get so many colonies, एक मिला, दो मिला, very poor. It could very, it can very well be that was a false positive. Difficult होता है, but it's possible. मैं 7 kb vector में 11 kb, it was NAV 1.5, it is a sodium voltage channel receptor in the human. I tried to clone that, and it was supposed to make that, put it in a mammalian cell, and then test for drugs for epilepsy, sodium voltage channel. So we tried to do that, but बहुत बार 10-15 बार करने के बाद एक दो मिला था, वो भी उसमें बहुत सारे म्यूटेशन मिला था, फिर उसको ठीक करना पड़ा, बहुत सारे, इट वाज हार्ड वर्क, बेकार। लेकिन if to buy that cell, the price of the cell was 1 crore, mammalian cell culture which has got this NAV 1.5 integrated. So you can if you have this particular cell line which has got NAV 1.5, you can keep on adding all drugs, you can see which drugs open the sodium channels. So if you have seizure, brain, mental problems and all these things, the sodium channels are normally blocked, they don't open. So you need these medicines which will open these sodium channels. So if you have a mammalian cell culture which has got this particular NAV overexpressing, then you can keep on grow these cells, keep on adding drugs and see if the channels are opening. The channels are opening, there is a voltage die, which leads an electrical impulse charge. You can detect it on your machine. Look, aram se you can do it. So our company, instead of wasting 1 crore to buy that, they decided that we will clone it directly from humans and we will transform it directly in mammal cell. We will make our own cell. वो करते एक मतलब लास्ट में देखा गया कि कॉस्ट ऑफ मेक वी मेड द सेल 1.2 करोड़ रफली लगा था बनाने में, मुझे बनाने में इट टुक 1.25 करोड़। सो 1 करोड़ से खरीद लेता तो वी वुड हैव बीन अंडर प्रॉफिट इतना टाइम, पर 1.2 करोड़ मतलब इंक्लूडिंग मेरा सैलरी का, मतलब हम लोग व्हेन द कॉस्टिंग वाज डन, मेरा जो सैलरी आता है, हाँ, केमिकल्स, अमाउंट ऑफ टाइम, अमाउंट ऑफ लेबर, सबका कॉस्टिंग किया गया जाता है, कंज्यूमेबल्स सब लेके एंड प्राइस ऑफ सेल सब कुछ लेके 1.2 करोड़ आया था। सो हम लोग 20 लाख वी कुड हैव मेड अ प्रॉफिट अगर खरीद लिया। लेकिन मेरा बॉस जस्टिफिकेशन इस तरह से दिया था, बोला 1 करोड़ तो इट यूज्ड टू ऐसे ही लगता, देन यू नीडेड माय लेबर, हाँ, सब कुछ उसमें ऐड हो जाता है। तो फिर उसको बॉस को ये जो एचआर बोला कि तो द अमाउंट ऑफ मनी टेकन वाज टू मेक दैट सेल लाइन, वो थोड़ा सा अपना टोपी पहनाने की कोशिश किया, वो लोग बहुत धुरंधर था, वो भी उल्टा टोपी पहना दिया उसको, बोला कि वो तो बनाने में ही आपको 1.2 लगाता है, उसके बाद तो डायरेक्ट तो काम तो कुछ रिजल्ट तो नहीं मिला, सिर्फ बनाने में ही तो मिला, कोई तो ड्रग तो नहीं मिला, उसका तो अलग कॉस्टिंग होता है। सो ऑल दीज थिंग्स, मतलब ही ट्राइड टू बी वेरी स्मार्ट, बोला कि दिस वाज अ, उसको फेल्ड प्रोजेक्ट कर दिया, मतलब नॉन प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट, मतलब 20 लाख लॉस में डाल दिया, दिस प्रोजेक्ट एट 20 लाख लॉस। फिर बट फ्रॉम दैट हम लोग को मे बी 20-25 ड्रग्स मिला which went for the next clinical trial by using this particular mammalian cell lines. जाते वक्त when I left the company, I told that you 20 lakhs and मेरा अप्रेजल को कम कर दिया, मेरा सैलरी को वहां पे मतलब इंक्रीमेंट को कम कर दिया, I have given you 25 drugs, एक निकल गया तो you'd be a rich company.
ये तब तक मतलब मैं अपना अपना ग्रुप हो गया, मेरा जो बॉस था उसके ग्रुप से मेरा अपना ग्रुप बन गया, आई बिकेम अ टीम लीड। एट दैट टाइम आई टोल्ड that that 20 lakhs loss is still written in your record book, remove that if you have made lots of profit from that। कब का वो 20 लाख चला गया, 100 करोड़, 200 करोड़ उन लोग का प्रॉफिट ही हो गया उससे। they made these drugs, they sold them to the market, और वहां से अभी मेडिसिन मार्केट में आ गया वो सब। हाँ क्या 2011 11 में नहीं, 11 नहीं, हाँ 11 11 12 में। दवाई नहीं, बेसिकली हाउ डू आई कॉल इट, सेल कल्चर में दवाई बनाना तो एक चीज है, इट्स नॉट ए सिंपल थिंग, बहुत सारे होता है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से क्लोन करो, then you have to put the clone thing, transform them into mammalian cell, फिर ऐसे करो भी डिफरेंट ड्रग्स से सेल कल्चर रिपोर्टर, डिफरेंट टेस्ट फॉर द ड्रग्स, कितना एक्टिविटी देता है, कितना मर जाता है। then it goes to pharmacokinetics, you study the absorption, metabolism, excretion, मतलब बॉडी में से कितना देर ड्रग्स, अगर तुम्हारे एक दवाई लोगे और वो दवाई अगर तुम्हारा परमानेंटली तुम्हारा बॉडी में रह जाएगा तो इट इज गोइंग टू कॉज हार्म। मेरा अगर कोई दवाई लिया इंसुलिन का, वो अगर बॉडी रिमूव नहीं करेगा, हाँ, तो मेरा तो ग्लूकोज लेवल फॉल करके मैं तुरंत मर जाऊंगा, क्योंकि वो तो ग्लूकोज को खींच रहा है अंदर में। हाँ, नहीं तो मैं पूरा पूरा दिन सिर्फ मुंह में सिर्फ चीनी खाता रहूंगा, दैट्स नॉट पॉसिबल ना। तो कितना देर ड्रग्स विल स्टे इन योर ब्लड सिस्टम, यू हैव टू मेजर दैट। फिर मेटाबोलाइज करके सम ड्रग्स आफ्टर मेटाबॉलिज्म इट बिकम्स इनटू अ टॉक्सिक प्रोडक्ट, यू टू चेक दैट टॉक्सिक। वो मेरा काम कर रहा है, शुगर कंट्रोल कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ मेरे लिवर को भी 12 बजा रहा है, डैमेज कर रहा है, टॉक्सिक। देन यू हैव टू स्टडी एक्सक्रीशन, कितना जल्दी निकल जाता है, आप कितना जल्दी लिया तो, लेकिन ड्रग काम करते करते 5 महीना लग गया, कितना जल्दी ले लेता है ब्लड में, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। बहुत जल्दी ला लिया तो बहुत जल्दी कर, एक पूरा दिन चाहिए। सो यू हैव टू, दिस इज नोन एज एडमी, एब्जॉर्प्शन डिफ्यूजन, कितना जल्दी शरीर में फैलता है। So this is done by pharmacokinetics. फिर after it passes pharmaco, first molecular clone हुआ, mammalian cell culture में different assays में test हुआ, next level of trial में गया जहाँ पे they do the ADME studies, pharmacology studies जिसे बोलते हैं, then it goes, this drug goes to actually animal testing, animal में chimpanzee, rats, इसमें they do the testing, finally human trials, फिर मार्केट में आता है। ठीक है, तब तक ऑल डेटा इज देयर। तो एक ड्रग फॉर एग्जांपल तुम्हारा, मेरे सेल कल्चर में 25 ड्रग्स मैं दिया हूं, हाँ, विच कैन गो फॉर द नेक्स्ट ट्रायल, दे विल सी द एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, एडमी का ये चीज देखेगा, फार्माकोलॉजी दे विल स्टडी, फिर वो जाएगा क्लिनिकल स्टडी में, एनिमल्स में देखेगा, रैट में क्या होगा, देन ह्यूमन, देन उसमें से 25 में से इफ यू आर लकी एक मार्केट में आ जाएगा, बाकी 25 का जो पैसा तुम खर्च किया वो वेस्ट में जाता है। रिसर्च में इट टेक्स अ लॉट ऑफ मनी। तो बेसिकली दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू डू। मेरा काम था क्लोन करो, सेल में ट्रांसफॉर्म करो, एसेस करके उसको एडमी को दे दो, एडीएमई को दे दो, सेक्शन को। एडीएमई का काम मैंने नहीं किया। यू कैन से जॉब में तुम देखोगे कंपनीज में डाउनस्ट्रीम रेगुलेटरी प्रोसेसेस बोलते हैं इसको, that start downstream regulatory processes, they start from ADME clinical trials, ये सब चीज, और मेरा था upstream clinical processing, upstream regulatory processes up to mammalian cell culture तक मेरा एक्सपर्टाइज था। so I did not have exact, जिसे बोलते हैं ना दवाई बनाने का पार्ट, that was done in the downstream regulatory process। मेरा वो एम था बाद में ये ड्रग बनेगा, लेकिन मेरा काम आगे था, इसके ऊपर था, तो दवाई बनाने के बहुत पहले। दवाई तो केमिस्ट्री, वो दवाई को मैं टेस्ट करता था बेसिकली, वो दवाई ठीक है या नहीं है, बनाता तो केमिस्ट्री का, जो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट होता था,
they used to synthesize this drugs and they used to make it. समझा ना? So exactly दवाई बनाना बोलना गलत है और एकदम नहीं ठीक नहीं है, दवाई नहीं बनाता था वो भी बोलना गलत है, ठीक है ना? बीच में मैं जो काम करता था दैट वाज इन्वॉल्वड इन मेकिंग ऑफ ड्रग्स, लेकिन मैं दवाई बनाता नहीं था, दैट वाज डन बाय द केमिस्ट्री डिपार्टमेंट. एनीवे, गो टू द नेक्स्ट थिंग, रेप्लिकेशन मैकेनिज्म. इसे कहते हैं रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म. सी द पिक्चर नेक्स्ट वाले में देखो, फर्स्ट वन में डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, छोटा सा खुलता है, देखो उसमें रेड कलर बना है, फिर ये खुलते 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 एक दो बन जाता है, जिसका एक स्ट्रैंड ग्रे है, वन स्ट्रैंड इज रेड. सो रेप्लिकेशन एज यू सी इट इज सेमी कंजर्वेटिव, ठीक है ना? इसका मतलब तो जब रेप्लिकेट होता है डबल स्ट्रैंड सिंगल स्ट्रैंड हो जाता है, इट बिकम सिंगल स्ट्रैंड टू साइड्स. इस स्ट्रैंड में the second strand is synthesized. So every new DNA molecule made has got one old strand and one new strand. ठीक है? That is how the replication takes place. Plasmids are stably inherited by daughter cells during cell division. Both plasmid is replication is it is independent of bacterial chromosomal replication. क्रोमोसोम अपना रेप्लिकेट कर रहा है, सेल अपना रेप्लिकेट कर रहा है, प्लाज्मिड भी रेप्लिकेट कर रहा है, ठीक है ना? समथिंग लाइक दैट. मतलब ये दोनों का लिंक नहीं है कोई कि दो प्लाज्मिड बना, दो सेल बना तो दो प्लाज्मिड बनेगा, ऐसे नहीं है. प्लाज्मिड अपने 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 मर्जी के मालिक है. इट्स में कीपिंग ऑन मेकिंग प्लाज्मिड्स आफ्टर प्लाज्मिड्स. क्रोमोसोम दो ही बनेगा, सेल डिवाइड करेगा, वन एक से दो बनेगा, दो से चार बनेगा, लेकिन प्लाज्मिड एक से दो, दो से चार नहीं बनेगा. व्हेन इट्स डिवाइडिंग, इसमें जैसे 5 से 10 प्लाज्मिड बने, 10টা প্লাজমিড তৈরি হয়েছে, 10 go to the left side cell, 10 go to the right, say 20 प्लाज्मिड्स आते हैं, 10 go to the left side new cell, 10 go to the right side new cell. ऐसे नहीं होता है, इसमें 2 जा सकता है, इसमें 8 जा सकता है, ये कोई ऐसे नहीं है. जो जिधर है काटने के टाइम जो जिधर है उधर चला जाए. ओके, इट कैन वेरी वेल बी दैट वन ऑफ देम एक भी नहीं गया, वो मर गया, ठीक है? दिस इज हाउ स्टेबिलिटी ऑफ प्लाज्मिड इज. सिलेक्शन प्रेशर रहेगा तो प्लाज्मिड रहेगा, सिलेक्शन प्रेशर नहीं रहेगा तो नो प्लाज्मिड, ठीक है? प्लाज्मिड्स एज वेक्टर्स तुम जानते ही हो. तुम यू कैन टेक द इंसुलिन जीन, यू कैन ट्रांसफॉर्म देम इनटू बैक्टीरिया. सो वेक्टर मतलब क्या? शटल. वेक्टर मतलब गाड़ी, व्हीकल. वो एक गाड़ी है, वो डीएनए को लेके बैक्टीरिया के अंदर चला गया. नाम क्या? पीवीआर 322 पीयूसी 18. क्लोनिंग प्रोसेस, शाश्वती मैडम इज गोइंग टू टीच यू दिस प्रोसेस. बेसिकली कुछ नहीं, वेक्टर है, डीएनए है, इंसर्ट डीएनए, डीएनए यू कैन डू अ पीसीआर. सपोज मेरा इंसुलिन डीएनए कैसे निकालोगे? मेरा एक सेल लोगे, पीसीआर करोगे, इंसुलिन का प्राइमर लेके यू डू पीसीआर, एम्प्लीफाइड, और प्राइमर में यू पुट द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट लेके ही इंसुलिन जीन मेरा एम्प्लीफाई होगा. साइड से काट दो, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से वेक्टर को काट दो, दोनों को जोड़ दो, ट्रांसफॉर्म कर दो प्लाज्मिड में, दैट्स इट, क्लोन बन गया. एंड सिलेक्शन प्रेशर में डाल दो एंटीबायोटिक, ताकि only the cells which have got my insulin gene they can only survive. बस, that is cloning. और कुछ नहीं है. It's as easy as that. So applications in protein productions. So insulin का तो एग्जांपल बहुत बार दिया हूँ, ऑलवेज वही लिख देना. ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन भी एक बनाता है, जैसे फॉर एग्जांपल सम बच्चे होते हैं ना, दे हैव गॉट अ सोमैटोस्टैटिन डिफेक्ट जीन, ग्रोथ हार्मोन का जीन एक्सप्रेशन देयर इज अ प्रॉब्लम. उन लोग का क्या होता है, क्लास 6 में भी एकदम छोटा बच्चा जैसा दिखता है, बड़ा हो गया, ड्वार्फ टाइप बन गया. सो बचपन से दे नीड दीज पर्टिकुलर इंजेक्शंस. ड्वार्फिज्म का और भी प्रॉब्लम्स रहता है, बट to keep on getting, if they keep on like insulin, if they take on keeping growth hormone injections,
दे कैन, मतलब लंबा तो नहीं होगा बट एटलीस्ट 4.5-5 फीट मतलब तक हाइट रीच कर सकता है। 4.5-5 फीट, जहां पे तुम 5 फीट 6 इंचेस से 6 फुट रहोगे, वहां पे ही विल कम अप टू 4 to 5 फीट, बहुत ज्यादा 4.5 फीट तक हो जाता है। तो उतना खराब नहीं लगता है, स्पेशली फॉर बॉयज उतना मतलब नाटा नहीं लगता है। अपना जो सुदीप तो सर जैसे है ऐसे लगेगा, मतलब मैथ्स डिपार्टमेंट में शॉर्ट, बट ओके एडजस्ट। ये नहीं है कि एक जैसे चल रहा है, इतना बड़ा सर इतना बड़ा हाथ लेकिन दाढ़ी गोफ है, लेकिन इतना छोटा चल रहा है, जैसे डॉर्फ टाइप का नहीं है, डॉर्फिज्म नहीं है। नॉर्मल लगेगा, बॉडी प्रोपोर्शनेटली फॉर्म करेगा, सर के बॉडी के हिसाब से तुम्हारा सर बनेगा, उसके हिसाब से अपना हाथ बनेगा। तुम डॉर्फ लोग को देखो छोटे होते, लेकिन उन लोग का सर देखो बड़ा रहता है। हाँ, उन लोग का उससे तो पता चलता है कि बच्चा नहीं है। अच्छा, तो ওরা ছোটবেলা থেকে ওকে গ্রোথ, একটা বয়স অবধি ছোট থেকে ওকে দেওয়া উচিত ছিল, দিতে দিতে ওই হাইটে পৌঁছবে। কিন্তু ওকে যখন দিয়েছে, যখন বাপ মা অত জানে না, ডাক্তারেও পেটে পেটে চলছে চলছে ওর তাই হয়ে গেল। পরে তুমি যখন পরে 20 বছর বয়সে তুমি দিলে আর সে লম্বা হবে। ঠিক আছে, তো একটা টাইম আছে when it's receptive to growth hormone। তুমি যখন বাড়ন্ত বয়সেতে যখন তুমি বাড়ছো, সেই সময় তোমাকে হরমোনটা চাই at the right dose। artificially you cannot regulate it। तो एग्जैक्ट जो नॉर्मल हाइट जो किसी को पता नहीं चलता है, वो नहीं होगा, पता चलेगा थोड़ा सा नाटा है। तो सब समय যে বেটে মানে জেনেটিক্স, your parents are shorter, you can also be shorter। it doesn't, it can be genetics also, but the dwarfism you can cure it to a normal level। उसमें क्या होगा, your head and body का जो proportion रहेगा ना, वो संतुलन रहेगा। ओके, तो DNA vaccines it can be used, cancer vaccines it is used, ड्रग डेवलपमेंट तो बताऊं क्या क्या कैसे काम होता है, बहुत देर तक बोले थे। ड्रग डेवलपमेंट किस तरह से ड्रग बनता है डेवलपमेंट में, क्लोन दोस ड्रिंक्स, एक्सप्रेस इट। आई गिव द एग्जांपल ऑफ NAB। हाँ सर, NAB, गिव द एग्जांपल ऑफ NAB। बस आज इतना ही है, इसका नोट तो मैं पहले ऑलरेडी दे दिया, दिस इज जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन। Hey online, any questions? नो सर। ओके, रुको तुम लोग भागो मत, मैं अटेंडेंस लेने वाला हूँ। एक पेन कहाँ गया, पेन 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 दो ना। थैंक यू, मेरा पेन शायद छोड़ के आ गया। टुडे इज 24th ना। অঙ্কিতা ব্যানার্জি। यस सर। হ্যাঁ, না না আছে আছে। অনুশ্রী মুখার্জি অ্যাবসেন্ট। আতিফ জাফর Yes, sir. देवारती रॉय आज एब्सेंट है। फैजा है 20। हाँ हाँ, खुशबू कुमारी रॉय, पोस्ट ऑफ साधु ना नहीं, पोस्ट ऑफ साधु লিপিকা দে না, আমি লিপিকারটা লিপিকাতে দিচ্ছি, লিপিকা 17 এইটা। তারপরে হচ্ছে মনীষা নেই। তো কি হলো, ওরা আমার ক্লাস কি ইচ্ছে করে অ্যাভয়েড করছে নাকি, সবাই তো একটা করে আমারটা বাদ দিয়ে। মোহাম্মদ ফাসি আক্তার আনসারি, মেহরোজ ফাতমা, मुस्कान परवीन, हाफिजा परवीन, मुस्कान परवीन अलग है ना। पुष्पा ठाकुर এসেছে দেখছি। रौनक अफरोज अजी आस्ते यहाँ पे नहीं है।
রিতিকা যাদব তো লেফট, রশনি, হ্যাঁ গ্রুপ তো ছেড়ে দিল তো, लेफ्ट ग्रुप बोल दिया, रूपेश, हाँ, सामरीन फातिमा, नहीं नहीं नहीं, संजना আছে, শালু অনলাইন, শালু, শালু, Yes, sir. শালু শ, শালু সিং সেম, कहकशान परवीन আজকে অ্যাবসেন্ট, সানা আফরিন অ্যাবসেন্ট, সানা আফরিন, সোনু প্রেজেন্ট, সৌম্যদীপ মুখার্জি প্রেজেন্ট, তান্নু ভারতী অ্যাবসেন্ট আজকে, বিশাল কুমার absent, হাফিজা পারভিন প্রেজেন্ট, ঈশা কুমারী absent, দিনাজ খাতুন প্রেজেন্ট, রুবি ঘোষ, অনুষ্কা লায়ক, थैंक यू वेरी मच ऑनलाइन वाले, बाय बाय। Thank you, sir. Thank you, sir.